हेलो बच्चों, मैं हूँ जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूँ फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेज बिकॉज इससे पहले जो मेरा क्लास था दैट वाज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो आज हमें कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं न्यूमेरिकल्स में जितने फॉर्मूले यूज होंगे। मेन फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज इज that is your length formula 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u। ये सबको याद है। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था m is equal to h dash by h is equal to v by u। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का जो कि फोकल लेंथ दैट इज m is equal to f by f plus u। और अगर मेरा फॉर्मूला b से रिलेटेड है फोकल लेंथ एंड b, दिस फॉर्मूला इज f minus b by l, right? After that we have studied about the lens maker's formula 1 by f is equal to n minus 1 or mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। very important formula, lens maker's formula, right? और हमें पता है कि जो पावर है that is 1 by f, therefore power can also be written like n minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। Power we can write like this. Then comes what? The thin lenses and contact। जो आपका फॉर्मूला था नेट फोकल लेंथ was 1 by f1 plus 1 by f2 in terms of power it has p is equal to p1 plus p2। अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव है तो f2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मेन यही फॉर्मूले हैं based on which we have to do the numericals now। We start with the first numerical। See now the first numerical. The focal length of a double convex lens is 12. That means convex lens at the focal length is definitely your plus 12 centimeter. And the radii of curvature is 15 centimeter and 10 centimeter. That means the radius of curvature is different। तो आप देखिए ना convex lens जो कि आपका ऐसा है, this is the convex lens, right? और इसमें आप ध्यान से देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले सरफेस का, इस सरफेस का अगर ये पोल है तो इधर सी है, तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का होगा दैट मस्ट बी योर पॉजिटिव। अब देखो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस शुड बी टेकन एज प्लस 15 सेंटीमीटर। वी टेक इट एज प्लस 15 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला जो कर्व सरफेस है इसका आप देखो, उसको P2 लेते हैं, उसको P1 लेते हैं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, so it should be taken as what? Negative। so R2 should be taken as minus 10 centimeter, right? Now find the refractive index of the material। so you have to find out n। that means you have to find out n और mu। आपको n या mu find out करना है। so definitely जैसे ही आपने given लिखा आपको समझ में आ गया that we have to use what? the lens maker's formula। so we use the lens maker's formula 1 by f is equal to n minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। कि आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में दे गिवन, आप लिखो साइन कन्वेंशंस करेक्टली पुट करो। सो वी स्टार्ट 1 by 12 is equal to n minus 1, r1 की वैल्यू रखते हैं 1 by 15, this is minus 10। that means this will become plus। so now we can write 1 by 12 is equal to n minus 1, this is 1 by 15 plus 1 by 10 and we start solving it। इसमें एलसीएम अलग साइड से नहीं लोगे आप, सीधे क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 को इधर रखो, 15 को इधर रखो। so now you see that 1 by 12 is equal to n minus 1। if you solve it this will be your 150 as the LCM। this will become 10 plus 15। so now this 1 by 12 is equal to n minus 1, this will be 25 by 150। इसको यही कट करके सॉल्व करते हैं। this is 1, how many times we go? 6 times। we get 1 by 12 is equal to n minus 1 1 by 6। करेक्ट? बहुत ईजी है सॉल्व करना। पहले यहाँ पे आप क्या करो, उसको कट कर लो, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, so this is 2 1 by 2। so we get what? 1 by 2 is equal to n minus 1। so n will come out as 1 by 2 plus 1। so n will be your how much?
2, this is your 1 plus 2, that is 3, and n is 1.5. Definitely it is glass. Upper refractive index you got as 1.5. That means it is glass. We do the next numerical. Next, a needle is placed 45 centimeter from a lens, forms an image on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा बच्चों कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है. 45 centimeter from a lens, forms the image on a screen placed 90 centimeter on the other side. Other side किस में बनता है? It is always formed in convex lens, क्योंकि convex lens हमेशा real image बनाता है. कनकेव में रियल बनते ही नहीं है, वर्चुअल बनते हैं. कनकेव में तो सेम साइड में बनता है. Therefore, lens definitely कौन सा है? ये convex है. So we could observe from this that this is definitely your convex lens. ये convex lens है जहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 45 centimeter distance. This distance is how much? 45 centimeter. Right? And on the other side of a lens is the screen. Image कहाँ पे बन रही है? Screen में बन रही है. How much distance? 90 centimeter. That means there's a screen here. The image is formed somewhere here. And this image is at a distance of how much? 90 centimeter. और दूर होगा, मैंने फिगर दिखाने के लिए आपको बताया है. So the image is formed on a screen which is at a 90 centimeter. Now you see, what is the type of lens? ये तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि लेंस कौन सा है. Convex lens. We'll write that. This is the convex lens. It's nothing but a convex lens. Then you have to also find out the focal length. आपको focal length भी find out करना. You have to find out the focal length. And if the length of the needle is 5 centimeter, अगर इसका, इस needle का मतलब object का height is 5 centimeter. Length of the needle means what? The height of the object is given as 5 centimeter. Then what is the length of the image? Then you have to find out that what is the length of this image. आपको image का length find out. Correct? So first, convex lens हो गया. Now you see that 45 is what? The object distance. And the image distance is what? 90. और हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव. इस तरफ है. We'll write U as minus 45 centimeter. V should be what? Positive इस तरफ है. So it should be taken as plus 90 centimeter. Plus 90 हो गया. Now we are going to put what? The thin lens formula. इसमें thin lens formula put करेंगे. So this will be your 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. We put the value 1 by F is equal to V की value is 1 by 90. Just see U is minus 45. This will be minus 45. It will become plus. So 1 by F will come out as 1 by 90 plus 1 by 45. LCM की कोई जरूरत नहीं है. 90, 45, so definitely LCM will be 90. So 1 by F will come out as 90 LCM ले लीजिए. This will become 1. This will divide by this 2, so that is 2. So now we get 1 by F is equal to 3 by 90. That means F will come out as 90 by 3, that is 30 centimeter. So the very first thing we have got, the focal length as 30 centimeter, right? Now we have to find out that what is the height of the image. Just see, what is the length of the image means H dash you have to find out. The height of the image, H dash. तो किस फॉर्मूले को यूज करेंगे? Magnification of formula, that is M is equal to H dash by H is equal to V by U. V और U की वैल्यू हमें पता है. And we know H dash. H we know it is how much? 5 centimeter. We can easily find out H dash. So we use this formula and find out M is equal to H dash by H is equal to V by U. Now see, H is given to you as 5 centimeter. V is given to you as plus 90 centimeter. And U is given as minus 45 centimeter. So we put the value, we can easily find out H dash. So H dash by H is equal to 90 by minus 45. H की value भी डाल देते. We put the value of H. So H is how much? 5. So H dash will come out as, this will cut with this 2 times. This will come out as minus 2 into cross multiply. It will come out as 5. So H dash will come out as minus 10 centimeter. So the height of the image is going to come out as 10 centimeter. So we do the next question. So this question, what's given to you? That you see,
It's a convex lens made of glass of refractive index 1.5. So, n is 1.5. और कैसा लेंस है ये? डबल कन्वेक्स लेंस है, राइट? बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इट इज अ इक्वी कन्वेक्स लेंस. ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है. दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हैं? इक्वल है. तो हम R1 को लिखेंगे, जो कि डेफिनेटली मैंने आपको भी बताया था कैसा होगा, पॉजिटिव. सो इट बी टेकन एज प्लस 20 सेंटीमीटर. और अगर R2 की बात करें तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. इसलिए R2 क्या हो जाएगा? minus 20 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन इज अ मस्ट थिंग, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे. तो R1 प्लस R2 माइनस में. नाउ एंड ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट. ऑब्जेक्ट की हाइट देखे रखिए 2 सेंटीमीटर की. इट्स गिवन एज 2 सेंटीमीटर हाइट. दैट मीन्स x is equal to 2 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. मतलब u is given to you. So u is how much? It has been given as 10 centimeter, means minus 10 centimeter. U को हमेशा आप minus लोगे. So what they're asking you? Find the position, nature and size of the image. आपको position find out करनी है, मतलब आपको V find out करना है, आपको nature find out करना है. तो क्या nature magnification से समझ में आ जाएगा? We can find out the magnification in the nature and then the size of the image, that is h dash. You have to also find out h dash. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का इक्वल दे के रखा है, राइट? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं और क्या निकाल लेते हैं? इस लेंस का फोकल लेंथ. काम आसान हो जाएगा. सो वी यूज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. 1/f is equal to n minus 1, 1/r1 minus 1/r2. So we put these values. 1/f will come out as n is 1.5 minus 1. 1/r1 की value 1/20. And this is your minus. R2 की value is minus 20. So this is minus 20. And now we get 1/f is equal to, solve this, we get it as 0.5. That means 0.5. This will be your 20. 1/20 plus 1/20. Plus 1/20. So you got it as 1/f is equal to 0.5. This will become 2/20. Correct? So now just reverse, or you can solve like this. Point हटा लीजिए, एक 0 लगाइए, 5 पे कट करिए इसको. This will be your how many times? 4 times. So f will come out as 40/2. That means it is 20 centimeter. We got the first answer. The focal length is equal to how much? 20 centimeter. Now see, we got the focal length. And what they're asking you? आपको second क्या पूछा गया है? That what is V? U is given to you. अब कौन सी चीज यूज करोगे? Now we are going to use the thin lens formula. We use the thin lens formula. F is 20. U is minus 10. We can easily find out what V. So we use this. 1/f is equal to 1/V minus 1/U. U was given as minus 10 centimeter. F we have got it as plus 20 centimeter. So we can easily find out what the V. V की वैल्यू निकालते हैं. This is 1/20 is equal to 1/V. This is minus 10. That means we'll get 1/20 is equal to 1/V plus 1/10. Or 1/V will be 1/20 minus 1/10. Take the LCM and solve. This will come out as 20. 20 is the LCM. This is 1 minus 2. 2 हो जाएगा. So 1/V will come out as 1/V is equal to minus 1/20. That means V will come out as minus 20 centimeter. V की वैल्यू आ रही है minus 20 centimeter. Correct. Now you see that the next that you have to see कि what is the nature of the image. और nature of the image का मेन तरीका क्या है? मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो. साथ में आपको साइज ऑफ इमेज भी पूछिए, जबकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी देके रखी है? 2 सेंटीमीटर. सो नाउ यू सी you have in minus 10 centimeter. You have just got what? V. V is how much? Minus 20 centimeter. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं. M is equal to V by U. So M is equal to V is minus 20. U is minus 10. This goes
and n comes out as +2. So just check that this is plus. अगर ये प्लस है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल. और अगर वर्चुअल है, दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल. देन अगर वर्चुअल है तो कैसा है, इरेक्ट है. और ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये 1 से ज्यादा है, तो m is greater than 1, that is true because 2 is greater than 1, so it is definitely what, large in size. और आप सब बच्चों को पहले से ही पता है कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड आती है. We got the answer for the nature. Last, what they've asked you? They've asked you that what is the size of the image? And the size of the object is given as centimeter. We can easily find out the size of image by using what? Magnification का formula. So we use it. M is equal to, क्या find out करना? Height. So M is equal to h dash by h. N की value we have got 2. H dash we have to find out, and h is given as 2 centimeter. So h dash will come out as 2 into 2, that is 4 centimeter. You've got a magnified image that is of 4 centimeter. Got it? So see now this question. A concave lens is kept in contact with a convex lens. A concave lens है which has been kept in contact with a convex lens. And convex lens का focal length is given. इसके focal length को हम f2 लिखते हैं, और क्योंकि convex है it should be +20 centimeter. इसका focal length हमें दिया हुआ है. And now the combination works as a convex lens of focal length 50 centimeter. ये जो combination है, it works like a convex lens of focal length 50 centimeter. That means +50 centimeter. You have to find out the power of concave lens. इसका power find out करना है. और पावर फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, द कंटैक्ट वाला जो फॉर्मूला बताया था मैंने. सो वी यूज दैट फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे ही देखा ये कनकेव लेंस है, इसको माइनस रख देंगे. नो, विच यू हैव टू फाइंड आउट. नेवर पुट अ साइन ऑन दिस. जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है न्यूमेरिकल में, उस पर कभी भी कोई साइन पुट नहीं करो. नाउ यूज इस 1/50 is equal to 1/f1. We have to find out 1/f2 is 20. So now 1/f1 will come out as 1/50. This will come to this side. This is minus 1/20. You'll get it as what? 1/f1 will come out as, solve it. LCM is how much? 100. To solve it, this will come out as 20. And this is 20 this side. This will go to this side, 50. Right? 50 divided by, no, it will come out as 100 if you take the LCM. If you take the LCM as 100. 50 divided by 100, 2. So this will come out as 2. 20 divided by 100, this will come out as 5. So we'll write it as 5. So 1/f1 will come out as minus 3/100. Don't forget, this coming out as minus. अब खुद देखिए, ये नेगेटिव अपने आप आ रहा है. -100/3. No need to put a sign which you have to find out. ये ऑटोमेटिक माइनस में आ रहा है, और आपको पता है ये कनकेव है तो माइनस में आना ही चाहिए. बट दिस इज कमिंग आउट इन सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो आपको बताया था कि पावर फाइंड आउट करना है. एंड पावर क्योंकि सेंटीमीटर में, सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, 100/f1. 100/f1 यूज करते. If you come out as 100, this is your -100/3. So we will get power as how much? Power is -3 diopter. This is the power of the concave lens. आपको concave lens का power मिल गया. Right? So we do the next question. So now you see this question, which is a combination of lenses. इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और बोर्ड में आ भी चुका है, बट वहां पे वैल्यूज अलग हैं. यहाँ पे जो वैल्यूज ली है मैंने वो मीटर्स में है. सो वी डू with meter only. No need to convert in centimeter because all the things are given in meter. You see the distance, ये सब दिया है मीटर में. Now see this figure which is having lens 1 is convex. This is your plano concave. The third is what? Again a convex lens. तो इसको हम खुद फिगर को बनाते हैं. We make this figure. So this is your convex first. पहला convex है. Then the next is plano concave. Next is plano concave. And the third is again convex.
common principal axis, and the object is placed at a distance of how much? This object has been placed at a distance of 0.3 meter from this lens. इसका ये object distance. इन दो लेंस के बीच का जो distance है, that's given to you as 0.05 meter. And the distance here is given as, इन दोनों के बीच का, that is 0.1 meter. And they have given the focal length of all the lenses. Length 1 का focal length, f1, is given to you as 0.1 meter. The focal length of the second lens, f2, is given as 0.1 meter. And that of the third lens, that is f3, is given as 0.3 meter. Correct? Everything is given in meter. हर चीज आपको मीटर में दी हुई है. So no need to convert at all. Now what they're asking you? In the distance of the final image from the third lens. इस तीसरे वाले लेंस से final image कहाँ पे बनेगा? इस वाले लेंस से image कहाँ बनेगा? That we have to find out. तो कुछ भी नहीं करना आपको. You start from the very first. आप पहला लेंस पहले दीजिए, उसका इमेज डिस्टेंस निकालिए. वो जो इमेज बनेगी उसकी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और जो इसका इमेज बनेगा वो थर्ड वाले का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. वी स्टार्ट इन ए सीक्वेंस. तो फर्स्ट लेंस, लेंस 1 स्टार्ट करते हैं. नाउ सी लेंस 1 के लिए द फोकल लेंथ इज गिवन and the object distance is u1, definitely negative, minus 0.3 meter. The focal length is given 0.1 meter. So you have to find out the image distance for the first lens. Use the thin lens formula. 1 by f1 is equal to 1 by v1 minus 1 by u1. If you use and put the value, this 0.1, this is equal to 1 by v1, this minus and again minus 0.3. This minus will become plus, so we'll get 1 by 0.1 is equal to 1 by v1 plus 1 by 0.3. Now you solve it. If you solve, we will get 1 by v1 equal to 1 by 0 minus 1 by 0.3. Remove point, put 10. एक 0 पर रखिए. So now you are getting 1 by v1 is equal to 10 minus 10 by 3. You take the LCM and solve. This will be your 1 by v1 is equal to 3 is the LCM. This is 30 minus 10. Will give you 1 by v1 is 20 by 3. So you are going to get v1 as how much? 3 by 20. If you divide, 3 by 2 is 1.5. 1 0 is there. So v1 will come out as 0.15 meter. तो इस पहले वाले लेंस का इमेज डिस्टेंस आपको मिल गया. कहाँ पे है? 0.15 मीटर. और ध्यान से देखो बच्चों फिगर को, ये 0.05 है, ये 0.1 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है? 0.15. दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म समवेयर हियर. इसका जो इमेज बना है वो 0.15 मीटर में कहीं यहाँ बना है. और इस वाले लेंस के लिए क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया. जो इसका इमेज बना वो इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो लेंस नंबर 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड आउट करोगे? दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 0.15. इन दो लेंस के बीच की दूरी कितनी है? 0.05. तो यह वही तो सब्ट्रैक्ट. तो सेकंड लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है u2, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? 15. ये पूरा डिस्टेंस है बच्चों 0.15. और इन दो लेंस के बीच का डिफरेंस दैट इज 0.05. सो u2 you are going to get as how much? That will be your 0.1 meter. U2 for this lens U2 is 0.1 meter. अब ध्यान से देखो बच्चों उसका फोकल लेंथ कितना दिया है? F2 is also given as 0.1 meter with a negative sign. So first now we are going to find out for the second lens हमारा image कहाँ बनेगा. So now you see for the second lens. Lens 4. Lens 2 के लिए U2 आया मेरा कितना? That is positive. One very interesting thing you see कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो इधर बना हुआ है. इधर बनने का मतलब है that means the object is a virtual object and you have to take it in plus sign. यहाँ negative sign बिल्कुल नहीं लगेगा. ये एक virtual object बन रहा है. It is plus 0.1 meter. And F2 we are going to write it as minus 0.1 meter. So write and solve for V2. So this is a plus 0.1 meter and F2 is minus 0.1 meter. So find out V2.
So 1 by f2 is equal to 1 by v2 minus 1 by u2. Now solve it. This is your minus 0.1. 1 by v2 we have to find out. This will come out as minus 0.1 meter. So 1 by v2 will come out as minus 0.1. And this is plus 1 by 0.1. It's going to subtract. क्या होगा? दो एक प्लस में एक माइनस में है. So 1 by v2 will come out as 0. और बच्चे इसको देख के खुश होकर लिखेंगे कि v2 is 0. No, v2 is 1 by 0. That means v2 is infinite. v2 is equal to how much? 1 by 0. That means it is infinite. v2 will come out as infinity. तो इसका जो इमेज बना है किस वाले का? सेकेंड लेंस का. सेकेंड लेंस का जो इमेज बना वो कहाँ पे बना है? इन्फिनिटी में बना है. अगर सेकेंड लेंस का इमेज इन्फिनिटी में बना है, इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन गया? इन्फिनिटी में. So, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी में होगा. सो वी आर गोइंग टू टेक u3 as what? इन्फिनिटी. और ध्यान से देखो बच्चों, इसका f3 कितना दिया है? 0.3 मीटर. So we have to find out v3. Very simple. So we are going to use it. Now you see for the third lens. अब आप यूज करिए third lens. When you use the third lens, you are going to use u2 as what? Infinity. And f3, u2 नहीं, u3. For the third lens it's u3. And the f3 is given as plus का 0.3 meter. So you have to find out the image distance. So 1 by f3 is equal to 1 by v3 minus 1 by u3. So 1 by f3 is 0.3 is equal to 1 by v3. You have to use something by infinity is always what? 0. किसी के नीचे infinity होगी तो क्या हो जाएगा? 0. You are going to get 1 by 0.3 is equal to 1 by v3. That means v3 will come out as 0.3 meter. You got the answer? आपको पूछा क्या था कि थर्ड लेंस से कितनी दूरी पे इमेज बनी है? तो थर्ड लेंस से दूरी कितनी है? The distance is how much? The distance is 0.3 meter. Right? So now we do the next question. This question is a combination of lens and mirror. ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है. इमेजेस बनती हैं लेंस से रिफ्रैक्ट होके और मिरर से क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्रैक्ट होगी and then the image is going to be formed. This is a very good question. Now see, in the figure, the direct image formed by the lens of an object at O and that formed after reflection from the spherical mirror are formed at the same point. Object जहाँ पे था, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, again रिफ्रैक्ट होके image कहाँ पे बनी? Same point O पे बना. Then they're asking you, what is the radius of curvature of the mirror? और इसका focal length आपको दे के रखा है. They have given the focal length of this as how much? This is given as f is equal to plus 10 centimeter. ये दिया हुआ है. और किसका radius of curvature पूछा है? इस mirror का radius of curvature पूछा गया है. So we make a separate figure. So it's very, then it will be clear to you. So this is your convex lens. ये convex lens है. Common principal axis है. This is your mirror, concave mirror. ये concave mirror है. Object is placed at a distance of 15 centimeter. वो जो रखा है वो 15 centimeter पे रखा है. As I've asked you कि radius of curvature क्या होगा और चीज दे के रखी है. Lens और mirror के बीच का distance is given. This distance is given to you as D लिख लेते हैं plus 50 centimeter. करेक्ट. अब ये क्या कह रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट एंड अगेन रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज यहीं पे बनी. ये तभी पॉसिबल है जब इस मिरर में, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो वहीं पे बने. क्यों ऐसा? बिकॉज यू नो, अगर कभी ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सी पे ही बनेगी. दैट मीन्स अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे ये सी है मान, दिस इज द सी, इस कनकेव मिरर का सी यहाँ पे है तो इसमें रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर इमेज बनेगी ना. व्हेन इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज, तो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? यहाँ बननी चाहिए. अगर इमेज यहाँ पे बनती है तो दिस रे इज गोइंग टू गो लाइक दिस. ये रे ऐसी जा रही है, सो इट्स गोइंग टू रिट्रेस द पाथ. ये रिट्रेस करेगा, इट्स गोइंग टू रिट्रेस द पाथ. ऐसे रिट्रेस करेगा. करेक्ट. एक और बना लेते हैं रे को. वन रे लाइक दिस इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज एट सी. जब ये सी में बनाएगा
तो क्या होगा, द रे विल गो एंड क्योंकि ये रिट्रेस करेगा, इट्स गोइंग टू रिट्रेस द पाथ, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ये रिट्रेस करेगा पाथ को एंड देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। रे जाते वक्त क्यों गई थी, राइट, सी पे इसका इमेज बना, इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। और अगर ऑब्जेक्ट सी पे बनेगा, यहाँ पे जो इसका इमेज बना सी पे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट सी पे बन रहा है तो इसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सी पे। अगर ये सी पे बनेगा तो फिर से क्या होगा, रिट्रेस करेगा, इट्स गोइंग टू रिट्रेस एंड द फाइनल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर ओनली, और डैश विल बी हियर। तो मेन थिंग क्या है, द मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे जो इमेज बनना है वो कहाँ पे बनना है, इसके सी पे। दैट मींस दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस थिंग इज योर आर, यही आर है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट आर पी डी। और दिया क्या है, देखिए दिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज 50 इज गिवन टू यू। अब क्या करते हैं कि इस वाले लेंस का अगर मुझे इमेज डिस्टेंस मिल जाए, इमेज डिस्टेंस कौन सा होगा, दिस विल बिकम द इमेज डिस्टेंस v, एंड वी हैव सीन फ्रॉम दिस फिगर ओनली क्या v प्लस r इज इक्वल टू 50। तो अगर v मिल जाता है और ये 50 दिया हुआ है, वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट r आराम से मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। नाउ सी, सबसे पहला काम है कि इस पहले लेंस का, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया है, u is also given to you as minus 15 centimeter. So we are going to find out what? We are going to find out v by using what? The lens formula. So we use the lens formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. As we use this formula, this is 1 by 10 is equal to 1 by v minus 15. That means 1 by 10 will be equal to 1 by v plus 1 by 15. Now solve it for v. So 1 by v will come out as 1 by 10 minus 1 by 15. So 1 by v, if you take the LCM, you can take it as 13. So this will become 3 and this will become 2. So 1 by v will come out as 1 by 30 और v will come out as plus 30 centimeter. और बच्चों आपको जब जल्दी करना है, MCQ क्वेश्चन आ गया, ये एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब याद रखो अगर कन्वेक्स और कनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट, v प्लस r। तो आप लिखोगे फॉर्मूला क्या, t इज इक्वल टू v प्लस r। d is v plus r, का मैग्नीट्यूड है बच्चों, नेवर टू पुट अ नेगेटिव साइन इन दिस। t is equal to what, t is equal to v plus r। so now if I use this d is equal to v का मैग्नीट्यूड प्लस r का मैग्नीट्यूड, तो d is how much, 50। वैसे भी b कैसा है, पॉजिटिव है, तो this will be 30। we have to find out r, so r out as 50 minus 30, that means the radius of curvature is 20 centimeter. So we have got radius of curvature as 20 centimeter, correct? So we have done a lot of numerical in lens. Even we have seen a combination of these lenses, combination of lenses, combination of lens and mirror also. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।